Hello everyone, welcome to my YouTube channel Dream to English. In this video, I will discuss an important topic that is phrasal verb. If you are not aware of what is phrasal verb and how to use phrasal verb in our daily communication, so don't worry, by the end of this video, you will have better understanding of what is phrasal verb and how to use phrasal verb in our everyday communication. So make sure do watch this video till the end. My name is Dr. Ratan Patel and I am an English grammar trainer. So let's deep dive into today's video topic, phrasal verb. Phrasal verb is a combination of a verb and a preposition and sometimes an adverb that together create a different meaning or a new meaning. For example, put on, which means to wear something. Phrasal verbs are used in everyday conversation. Knowing how to use phrasal verb in our everyday conversation can make you more professional, more stylish and more confident. So let's learn more phrasal verbs that start with C letter in English. First one is call in, किसी को बुलवाना. Call off, समाप्त करना, वापस लेना. Call up, याद करना, टेलीफोन करना. Call for, मांग करना, आवश्यकता होना. कॉल ऑन, थोड़ी देर के लिए जाना या रुकना. कॉल आउट, बुलाना. कॉल एट, किसी के घर या स्थान आदि पर थोड़ी देर के लिए जाना. कॉल बैक, वापस बुलाना. कॉल डाउन, प्रार्थना करना. केयर अबाउट, चिंतित होना. केयर फॉर, पसंद करना. कैरी अवे, आपे से बाहर करना, उत्तेजित करना. कैरी ऑफ, जीतना. कैरी ऑन, जारी रखना, चलाना, निभाना. कैरी आउट, आज्ञा का पालन करना. कास्ट असाइड, छोड़ देना, त्याग कर देना. कैच अप विद, आगे निकलना. कैच आउट, गेंद को लपक कर आउट करना. चीयर अप, ढाढ़स बनाना, बढ़ावा देना. चीयर अप, अधिक प्रसन्न होना या करना. क्लियर अवे, छट जाना. क्लियर ऑफ, छुटकारा पाना. क्लियर आउट, प्रस्थान करना, चला जाना. क्लाइंब डाउन, नीचे की ओर आना, उतरना. क्लाइंब अप, बढ़ना. क्लोज डाउन, स्थायी रूप से बंद करना. क्लोज इन ऑन, क्लोज अपॉन, ढक देना. क्लोज विथ, स्वीकार करना. क्लाउड ओवर, अस्पष्ट करना, ढकना. कम अबाउट, होना. कम अक्रॉस, संयोग से मिलना. कम आफ्टर, पीछा करना. कम अलोंग, जल्दी करना. कम एट, पहुंचना या प्राप्त करना. कम एट, हमला करना. कम अवे फ्रॉम, से अलग होना, जुदा होना. कम बैक, लौटना, वापस आना. कम बिटवीन, संबंध में हस्तक्षेप करना. कम बाय, प्रयास से प्राप्त करना. कम डाउन, उतरना, गिरना, नीचे आना. In next video, I will discuss more phrasal verbs that start with C, and this will be part second of phrasal verb that start with C. Thank you for your time. I hope you found this video more helpful and more informative. If your child is in class 1st to class 5th and you are worrying about your child's study, you can book a consultation call with me, which is absolutely free. In this consultation call, you will get 3 tips. Tip number 1 is how to improve pronunciation. Tip number 2 is how to improve reading skill. And tip number 3 is how to improve vocabulary. So don't forget to like, share and subscribe this YouTube channel. See you in the next video. Till then, take care. Bye bye.